Hello students, this is our third session and we will discuss here about the laws of chemical combinations. Actually जितना भी reaction होते हैं all are governed by certain chemical laws which are known as laws of chemical combinations. In our syllabus there are different laws of chemical combinations. First one, laws of conservation of mass. Already we have some idea about this law from class 9, which was invented by scientist Lavoisier. Second, laws of definite or constant proportion by Proust. Third one, laws of multiple proportion by Dalton. Fourth one, laws of reciprocal proportion by Richter. And last two, Gay-Lussac's law, that is by Gay-Lussac and Avogadro's law. So these are the 6 laws. Out of these law, which is laws of reciprocal proportion, is out of CBSE syllabus. So no need to read about this law. We have to read all these things. So today we will discuss these laws along with different types of MCQ depending upon these laws. The first one is laws of laws of conservation of mass. Means in a chemical reaction, total mass of the reactant becomes equal to total mass of the product. That is mass neither created nor destroyed. But these law, that is laws of conservation of mass, has limitation in case of nuclear reaction. That is in radioactive disintegration. Radioactive disintegration, the mass of the product significantly less than mass of the reactant. तो ये जो मास कम होते हैं प्रोडक्ट का, वो कहाँ जाते हैं? For this we have to go to the Einstein relativity theory, that is E equal to mc square. That is the mass which is less in case of product, it changes to the energy according to the Einstein theory, that is E equal to mc square. ये जो डिफरेंस होते हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो मास है उसमें जो डिफरेंस होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट. So these law can be we can say this as Einstein mass energy conservation law. That is mass is converted to another mass with energy, that is mass of the reactant and the mass of the product plus some energy. So we can write this one as mass of a reactant equal to mass of products plus energy. That's why we can say this as laws of conservation of mass and energy. Number 1. So this is up to you have to know about laws of conservation of mass, what the statement as well as its limitation. Another thing,
जो 4 लॉ जो बोला था, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, which is not included in CBSE syllabus. All these are known as stoichiometry law. Stoichiometry law. Stoichiometry means where simple whole number ratio will be there in the cation, anion, or the different types of atoms. Okay. Now, second one, laws of definite proportion. Laws of definite proportion means laws of definite proportion. Means any compound, say water, it has so many sources: rainwater, river water, pond water, tube well water, whatever may be. Any compound, say example, a compound, whatever be the sources, whenever analyzed, the ratio of weights of the constituent element will always be same. Say in water, ratio is 2 is to 18, 2 is to 16 equal to 1 is to 8. That is from whatever be the sources, whatever be the sources, if we analyze this water from any of the sources, collected from any of the sources, its ratio of hydrogen and oxygen will always be same. But remember, it has also a limitation. Say water and D2, both are water. One is normal water, other is heavy water. Same isotope, that is protium, deuterium. In isotope, there is a difference in mass. So in that case, laws of definite proportion does not hold good. Clear? If any compound is made up of an element, and if there is an isotopic difference, that is, isotope means they have different mass, then these laws of laws of definite proportion, there will be limited. It does not hold good for this type of element. Both are water. One is made up of protium, another is made up of deuterium. So there will be difference in mass of hydrogen and deuterium. So if we collect hydrogen from water from one source, heavy water from another source, there will be difference in the ratio of weight. So it does not hold good. Next come to laws of multiple proportion. Laws of multiple proportion means if two elements, say hydrogen and oxygen, combine together to form more than one compound. Say whenever hydrogen and oxygen combine together, they can form water or they can form hydrogen peroxide. And the ratio of weight 2 is to 16, here 2 is to 32. It will be 1 is to Now, what is law of multiple proportion? Means whenever two elements combine together to form more than one compound, then the ratio of weight of one element which reacts with the fixed masses of another element contain simple whole number ratio. Means
Here weight of hydrogen is fixed 2 2. So weight of oxygen in different compounds 16 is to 32, that is 1 is to 2. Again I am telling, if two elements combine together to form more than one compound, then the weight of the element which combines with the fixed masses of another element contain simple whole number ratio. This is law of multiple proportion. Next, law of reciprocal proportion. This is out of syllabus, no need to read this one. No question will come in JEE or NEET. Okay. Next, come to Gay-Lussac's law. Now come to Gay-Lussac's law. Under the conditions of same temperature and pressure, the volume of gases react together bear a whole number ratio to one another, and also with the volume of the products if all are in gaseous form. Means whenever two gases react together and forms a compound which is also gas, then these reactants and products will contain a simple whole number ratio. Say hydrogen plus chlorine forms 2HCl. So volume 1, 1, 2. That is 1 is to 1 is to 2. This is whole number ratio. This is simple Gay-Lussac's law. Before that, we have discussed three laws: laws of conservation of mass, laws of definite proportion, laws of multiple proportion. These laws, on these three laws, there is no effect of temperature and pressure, because these three laws depends on weight. That is weight और मास रिलेटेड डिस्कशन है इसमें. तो जहां पर मास रिलेटेड डिस्कशन है वहां पर टेम्परेचर कोई इफेक्ट नहीं होते, क्योंकि मास टेम्परेचर द्वारा अफेक्टेड नहीं होते हैं. बट इट इज गैस, तो गैस इज चेंजेस बाय टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ. Gas is changes with pressure according to Boyle's law. This we will discuss in chapter number 5. But unfortunately for this year, this chapter 5, that is states of matter, is excluded from CBSE syllabus. Okay. So this is gas related or volume related law. So here condition, that is temperature and pressure, we have to mention in the exam. Say in your school exam, if these questions come, that is state Gay-Lussac's law, you should write, and you have to write temperature, pressure, because volume is related temperature द्वारा वॉल्यूम रिलेट होते हैं. अगर नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं भी मिल सकते हैं. नेक्स्ट लॉ, एवोगाड्रोस लॉ. Now Avogadro's law. What is this law? Equal volume of all gases. Equal volume of all gases under same temperature and pressure contains equal number of particles, that is molecules. Again, equal volume of all gases under similar or same temperature and pressure contains equal number of molecules. Actually है क्या? To know this law, we have some idea about mole concept. In this law,
अगेन डिस्कस इन चैप्टर 5 दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। एक्चुअल क्या होते हैं, मोल जो होते हैं, वन मोल, मोल मीन्स एनी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का जो मास होते हैं उसको अगर हम लोग ग्राम में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास। से कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज 44 ग्राम। या किसी एटम का जो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ से Na 23 ग्राम। किसी मॉलिक्यूल का 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, किसी भी एटम का 1 ग्राम एटॉमिक मास, हर किसी को हम लोग बोलते हैं 1 मोल। अभी 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का जो मास होते हैं इसको बोलते हैं मोलर मास। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 ग्राम पर मोल। पर मोल आएगा जब हम लोग मोलर मास का यूनिट लिखेंगे, मीन्स ग्राम पर मोल। 44 ग्राम पर मोल होगा मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का। सोडियम का मोलर मास होगा 23 ग्राम पर मोल। नाउ 1 mole of any substance, say it may be molecule, it may be atom, at STP, standard temperature and pressure, its volume will be 22.4 liters, 22.4 लीटर। तो हम लोग उसको कैसे बोल सकते हैं, 1 मोल से क्या क्या आते हैं, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस, किसी भी एटम का जो 1 ग्राम एटॉमिक मास होते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये भी 1 मोल। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का सब्सटेंस का 6.022 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहते, इसको भी हम लोग 1 मोल कहते हैं। और किसी भी एट एसटीपी किसी भी सब्सटेंस का अगर वॉल्यूम 22.4 लीटर होते हैं, इसको भी हम लोग 1 मोल ही बोलते हैं। तो एवोगाड्रोस लॉ क्या था, under similar temperature and pressure equal volume of all gases contains equal number of atoms। अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम होगा, इक्वल वॉल्यूम होगा तो इक्वल नंबर ऑफ एटम होगा, इक्वल वॉल्यूम होगा तो इक्वल नंबर ऑफ एटम होगा। तो यहां से एवोगाड्रो जो लॉ है ये आया एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस से। एवोगाड्रो जो हाइपोथेसिस होते हैं, यहां से डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडिया हम लोग को मिलते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। तो व्हाट इज द वॉल्यूम, 22.4 लीटर। अगर हुआ कि 2 3 4 सब्सटेंस का, तो इसका होगा सेम नंबर ऑफ, दैट इज 6.022 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिस नंबर को हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रोस नंबर। So this is all about your laws of chemical combination, laws of conservation of mass, laws of definite or constant proportion, laws of multiple proportion, then Gay-Lussac's law, then Avogadro's law. Actually all these laws already given in your NCERT book, and language of this law in NCERT book is very easy, so you can read this one from NCERT book if you want. Okay, now we will do some MCQ depending upon this law. Laws of reciprocal proportion is not included in CBSE syllabus, so no need to read this law. Clear? So let's see some
MCQ related to these laws of chemical combination. Another thing, if anybody has any doubt about this law or about, because this is my session, third session. In first session I have discussed, second session I have discussed various things. In third session I have discussed these laws of chemical combination. If anybody has any idea, any doubt, then you can comment me. In next class, I will try to solve your doubt. Okay, let's see some MCQ related to this law. First MCQ. Hydrogen and oxygen combine to form H2O2 and water containing ethopercent and ethopercent hydrogen respectively. The data illustrate. Very easy numericals. Very easy MCQ. And this type of MCQ will come. And it's coming. Okay. So very easy. ये जो परसेंटेज दिया है हाइड्रोजन का, परसेंटेज जो दिया है हाइड्रोजन का, यहाँ से हम लोग को बाहर करना पड़ेगा जो ऑक्सीजन जो यूज हुआ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और वाटर में, इसका रेशियो क्या होल नंबर आते हैं या नहीं आते, ये हम लोग को पहले देखना पड़ेगा. अगर आया तो वेरी इजी. लेट्स सी. इट इज एमसीक्यू, so no need to follow our CBSE pattern. Okay, in CBSE pattern, CBSE board pattern, there is some rules how you have to write the answer, yeah, how we have to write to the numericals. But since it is MCQ, so no need to follow any rules, just roughly you can do and take the answer. So say here hydrogen peroxide H2O2, H2O2 में हाइड्रोजन कितना दिया 5.93, तो ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन का रेशियो होगा 100 से माइनस कर देते हैं 94.07. ये है हम लोग का ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का. ये है हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन का रेशियो. इन वाटर 11.2 इज टू होगा 88.8. ये होगा क्योंकि ये तो परसेंटेज है, हाइड्रोजन का दिया है तो 100 से माइनस कर देंगे, ऑक्सीजन निकलेगा. अभी देखते हैं ये जो वाटर है इसका अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, 2 द्वारा डिवाइड कर देते हैं तो क्या आते हैं 5.9, ये आते हैं नियर अबाउट 47 आते हैं, नियर अबाउट 47. अभी देखो इसका जो रेशियो आता है 5.9, ये भी शायद 5.93 होगा, तो 5.9 है मतलब 93 से हम लोग लिख सकते हैं. इसका जो फिक्स्ड मास है, जैसे हाइड्रोजन का जो फिक्स्ड मास है 5.9 या 5.9 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ऐसे ही आएगा. इसके साथ ऑक्सीजन का जो अलग अलग मास यूज हुआ कितना 94.07 और एक है 47. इसका रेशियो करीब 2:1 आएगा. नियर अबाउट, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आते, नियर अबाउट आते. तो हाइड्रोजन का फिक्स्ड मास के साथ ऑक्सीजन का जो मास ऐड हुआ वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो मेंटेन करते हैं. मतलब कौन सा होगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. देखो अगर किसी का कोई डाउट है तो पूरा देखो.
Now come to the second one. 1.5 gram of hydrocarbon combustion in excess of oxygen produces 4.4 gram of CO2 and 2.7 gram of water. The data illustrate these 4 laws I have given. Again, hydrocarbon, mass of hydrocarbon, that is कैसे करेंगे? That is mass of hydrocarbon means mass of hydrogen in hydrocarbon. हम लोग ऐसे लिखते हैं mass of hydrocarbon HC means hydrocarbon 1.5 gram. Now कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ 4.4. तो हम लोग देखो 44 ग्राम CO2 में कार्बन रहे थे 12 ग्राम. तो 4.4 ग्राम में कार्बन कितना रहते हैं? कार्बन रहेगा 12 इंटू 4.4 डिवाइड बाय 44, isn't it? तो इट विल बी कैंसिल करने के बाद क्या आएगा? 44 1.2 ग्राम. ये आएगा कार्बन का मास. मुझे देखना है आफ्टर द रिएक्शन मास ऑफ कार्बन एंड मास ऑफ हाइड्रोजन. अगर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन के साथ ऐड हो गया तो ये तो डेफिनेटली सेम हो जाएगा. तो डेफिनेटली क्या होगा? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होगा. तो मास ऑफ कार्बन हम लोग बाहर किया. अभी वाटर का अगर बाहर करेंगे तो क्या होगा? 18 ग्राम वाटर से हाइड्रोजन मिलते हैं कितना? 2 ग्राम. तो राफली करना करते हम लोग. और 2.7 ग्राम से कितना होगा? 2.7 ग्राम वाटर से हाइड्रोजन मिलेगा 2.7 बाय 18. करो उसको पॉइंट जाने से होगा 10. तो 2 इंटू 27 बाय 18 इंटू 10 2 3 कैंसिल 2 कैंसिल. ये होगा 0.9 ग्राम. वहाँ होगा 3 होगा 0.3 ग्राम. तो ये आया हाइड्रोजन का मास. तुम लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हो. और एक बात याद रखना, ऑलवेज कैलकुलेटर यूज मत करो, मैन्युअली करो. क्योंकि ना सीबीएसई बोर्ड में, ना नीट में, ना JEE में कैलकुलेटर यूज कर सकते हो. तो इससे बेहतर क्या होता है? मैन्युअली करो. और ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आते हैं जो तुम लोग मैन्युअली नहीं कर सकते हो. क्लियर? इसलिए जितना हो सके पढ़ाई में, दैट इज कोचिंग में या तुम्हारा पढ़ाई जो सीबीएसई का जो पढ़ाई है, जितना हो सके कैलकुलेटर को अवॉइड करो. क्योंकि बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में हम लोग कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते. क्लियर? इसलिए ऐसा न्यूमेरिकल्स ही आएगा जो तुम कर सकते हो. ओके, तो हम लोग देखते हैं आफ्टर कैलकुलेशन कार्बन प्लस हाइड्रोजन कितना आते हैं? 1.2 प्लस 0.3 ग्राम, दैट इज 1.5 ग्राम. तो मिल गया. ये था मास ऑफ द रिएक्टेंट, ये था मास ऑफ द प्रोडक्ट. डेफिनेटली आंसर होगा लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. देखो कोई डाउट है क्या? ये हम लोगों को जानना पड़ेगा. क्योंकि ये जो फॉर्मूला है, जैसे हाइड्रोजन और कार्बन बात करते हैं हम लोग, इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कैसे हम लोग बाहर करते हैं. इस टाइप में ये फार्मूला बहुत काम आते हैं. तो इससे अच्छी तरह से समझो. 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन निकलते 12 ग्राम. तो 4.4 ग्राम से कितना कार्बन मिलेगा? 18 ग्राम वाटर से हाइड्रोजन मिलते 2 ग्राम. तो 2.7 ग्राम से कितना मिलेगा? क्लियर? देखो किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है.
Number 3. In the decomposition of impure KClO3, 4.9 gram of it gave 1.49 gram of KCl and 0.03 mole of oxygen gas. What is the percentage of purity of KClO3? ओके, याद रखना यहाँ पर ग्राम में, सब कुछ ग्राम में है, ये मोल में है, तो इसलिए हम लोग उसका बैलेंस्ड जो केमिकल इक्वेशन है वो लिखते हैं 2KClO3 जब थर्मल डिकम्पोज हुआ 2KCl प्लस CO2। अभी क्या दिया, क्या इसका जो वेट है 4.9 ग्राम दिया, जो इम्प्योर होते हैं, और इसका मास दिया 1.49 और ये दिया हम लोग का 0.03 मोल। अगर इसको ये ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, तो इसको हम लोग ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो 3 मोल होगा तो 96 होगा ऑक्सीजन का, 0.3 होगा तो 0.96 ग्राम। अभी देखिए इसका मास कितना होता है। इसका तो मास आया 4.9 ग्राम, इसका मास 1.49 0.96 होगा, करीब 2.45 होगा, तो लिखते हैं हम लोग 2.45 ग्राम हुआ। तो परसेंटेज ऑफ प्योरिटी कितना होगा, ये है मास ऑफ द रिएक्टेंट, ये है मास ऑफ द प्रोडक्ट, तो इम्प्योर कितना होता है, तो परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी, होगा 2.45 4.9 इंटू 100, दैट इज जो आएगा डबल, हाँ ये हो जाएगा 50% के आसपास। तुम लोग कैलकुलेशन करो और करके देख सकते हो। ठीक है, तो आज इतना तक देखो। हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बाहर करते हैं, और उसका जो किसी का अगर इसी एमसीक्यू में, इसी टाइप का जो एमसीक्यू है इसमें डाउट है, तुम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। क्लियर? बार बार मैं एक ही बात रेगुलर हर वीडियो में बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक जो है वो अच्छी तरह से एनसीईआरटी बुक को पढ़ो और उसका लाइन बाय लाइन पढ़ते रहो, देखोगे एमसीक्यू अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। क्लियर? ओके, थैंक यू।